In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. By the time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deed and advise each other to truth and advise each other to patience. A very warm welcome to the another live session organized by the podcast Grow Together. I am your host, Mudassir, and today we have Sarah Rizvi as a co-host. Today's session is very important, and I am very curious about it to know about the curiosity.net. It is something about very important. Our kids of 90s and 80s always have a problem that they do not have the much opportunities to join the corporate organization. It's an interesting opportunity for the ones who are the smart. I'm very honored to have a panel which Sarah will introduce. They understand this problem and introduce a unique website or the app for the students. Sarah, please introduce the panel first. First off, we have Ms. Zartaj Ahmed, who happens to be formerly a software engineer, who is now a tech entrepreneur. She has founded both Curiosity and PySpace Science Education Center. Not only is she a STEM role model, but a motivational speaker for the youth and continues to inspire the youth and help those who are on their journey of becoming what they dream to become in the future. And along with this, Ahmed, we also have her, the Curiosity's chief designer officer, who is Mr. Nahyan Farooq. He is an engineer himself and an MIT innovative leader, a changemaker at the ChangemakerXchange. And both of you guys, I would like to warmly welcome you guys, and thank you so much for accepting our invitation. Aap dono kaise hain? Kaise? Aap dono? We're doing good. Thank you very much for the lovely introduction. Absolutely. Thank you so much for that. Again, it's an honor for us to have you both on my show. We just start from the very beginning, Zartaj. Okay, from where the idea started, so what was the thought behind it? So I should start from once upon a time, long ago, in a land far away. So since it's a story, so basically I'm a software engineer by qualification. And I have spent a good part of my life in the corporate career where I was involved in IT management, network management. Then I just like any other girl in Pakistan or anywhere, I got married, I had kids. With kids, I couldn't continue my routine job. And so I had to sit home for a while when I had my daughter as well. So my son is the first one. When I had my kids and I sat home, I realized that if I want to go back to my work life, I will not be able to keep up with the pace of the technology because I was in the tech field. So considering that, I underestimated the job of a school. And I said that, I can be with my kids for the rest of the day. So I started working at a school called Huck Academy, and this is 2010. Almost 10 years back. 11 years back, yeah. 11 years. So yes. So the last year, no pandemic, yeah. हाँ जी बिल्कुल आपने वो pandemic वाला minus कर दिया. So I was a computer teacher over there, and I was just like any other teacher, but मेरे अंदर जो है ना वो एक कोई unique different चीज करने का मेरे अंदर कीड़ा है, I should say. So I always try to do something which is different. And so I wasn't a teacher, which normally teachers are. So I would try to groom my students as well and would want to give them practical hands-on experience as part of the computer science subject. जब मैंने ये वहाँ पे किया, then I got introduced to robotics over there. और robotics के साथ was STEM education in 2010 when none of the schools were talking about it. So वहाँ से फिर हमने, I started, introducing robotics. I became a robotics trainer. I did some certifications. फिर मैंने वहाँ पे robotics competition भी करवाया. And then I was approached to establish robotics labs in Pakistan. पहला STEM Education Institute Pakistan का वो मैंने founding team member के तौर पे establish किया. और वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात नेहान से हुई. नेहान as an intern वहाँ पे आए थे. तो स्टोरी में नेहान की एंट्री हो गई है. नेहान एज एन इंटर्न वहाँ पे आए थे और नेहान just like all the other engineers, so I used to work with fresh recent graduates and I used to train them on how to teach kids. अब आप सोचिए कि engineers जो हैं वो ज़्यादातर
लड़के होते हैं, वो समझा जाता है ना, यू नो द इंजीनियरिंग फील्ड इज फॉर बॉयज एंड टीचिंग फील्ड इज फॉर गर्ल्स, या डॉक्टर्स बन जाए लड़कियां, बहुत ही तीर मारा डॉक्टर्स बन गई। अब वहां पे ये जो आते थे इंजीनियर्स, उनके लिए चैलेंज ये होता था कि वो बच्चों को पढ़ाएं कैसे। एंड व्हेन आई से बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट 6-7 year olds जो आके वहां रोबोटिक्स सीख रहे हैं, हाई टेक कोर्सेज कर रहे हैं। सो दोज वर द किड्स। एंड सो नेहान वाज वन ऑफ द इंटर्न्स, एंड नेहान फिर वहां से अपनी स्टडीज परस्यू करने ऑस्ट्रेलिया गए। और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने काम शुरू किया विक्टोरियन स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर में। फिर नेहान जब छुट्टियों में वापस आते थे, so उसमें वो एक दफा जब आए तो he discussed this idea with me and he said कि we should start something along these lines in Pakistan, because he and I both were passionate about STEM education and doing something different in the education space for the kids in Pakistan. So Nehan का भी ये vision था। So we started off with Pi Space Science Education Center, जो हमारा पहला startup था, जिसके लिए we went to different investors, बहुत सारे लोगों के पास नहीं, हमें बहुत disappointments हुई। अप्रैल 2018 में हमने बिल्कुल ही जिद में आके ना हमने कहा कि बस अब पहली वर्कशॉप हम करते हैं, अब किसी भी तरह से करें। अब उस वर्कशॉप का जब टारगेट हमें मिला, सो वी स्टार्टेड ऑफ, अच्छा जी अब स्पेस साइंस है तो वहां पे VSEC में लोग फ्लाइट सूट्स पहनते हैं, तो हमने सबसे पहले फ्लाइट सूट्स बनवाए जो बिल्कुल आपने जी जी जी। So we wanted to give immersive experience to the students. Now अब हम जब किसी भी वर्कशॉप में जाते थे तो बच्चे were like, ये शायद एस्ट्रोनॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? Right, representation matters, right? Exactly, and that is what we realized कि learning अगर आपको करवानी, you have to engage the kids first, and that is our mission कि हम hands on हर चीज करते हैं। फिर पाई स्पेस साइंस के साथ हमने काफी अरसे फिर काम किया, और माशाल्लाह हमने मेरे ख्याल में 12,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। हम थर से लेके इस्लामाबाद तक गए हैं। थर में आप सोचें हमें उनकी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती थी, एंड वी ट्रेन देम। और फिर कोविड के बीच में QriosityNet was born, which was also part of the thing कि हम पेरेंट्स से स्टूडेंट्स से इतना डील करते थे। एक तो इमर्जिंग करियर्स के बारे में नहीं पता होता लोगों को, पेरेंट्स बच्चों को नहीं गाइड कर सकते कि what are the new careers that are there. So all of that led to QriosityNet. So ये है जी स्टोरी का आगाज इस तरह से हुआ, QriosityNet तक इस तरह पहुंची, but we'll share more details with you as and when we move ahead. जी this is very well. हाँ, मैं ये पिक्चर देख के बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा काइंड ऑफ कैसे जैसे डायरेक्ट स्पेस से कोई टीम आई है हमारे पास यहाँ पे। बिल्कुल। No, but this is amazing क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में स्पेशली आप नहीं देखते हैं, राइट? दिस इज़ कॉमन, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है कि आम स्कूलों के अंदर इस तरीके से कोई आपके स्कूल में आए, कोई भी प्रेजेंटेशन करे, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि बच्चों को भी ये बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे फॉरम से, ऐसे मीटिंग से, उनको ये सब जब वो देखते हैं तो। And how was your experience जब आपने इसको ज्वाइन किया? You were doing internship there और फिर आपने इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने। So yeah, जैसे ज़रताज ने शेयर किया, I think it was back in 2013 जब मेरी ज़रताज से मुलाकात हुई थी robotics labs में, so she was my mentor over there. And then in 2015 मैंने Victorian Space Science Education Center join किया. And I still remember, I vividly remember that moment when for the first time I stepped inside VSEC. So Victorian Space Science Education Center को जिसकी abbreviation है, that's VSEC. So I still remember vividly the first time I stepped inside VSEC. तो मैंने बोला कि यार ये मुझे ना पाकिस्तान लेके जाना है किसी ना किसी तरीके से. And I think me and Zartaj were on pretty good talking terms back then as well. She used to keep in touch with me, Kiji, how's your university coming along? And I was always very active. Kiji, I'm good. Aap bataएं, how's robotics labs and this and that. So I remember when I came back to Pakistan, so I met with Zartaj and I was like, this is where I'm working. मैंने pictures वगैरह दिखाई. And I knew it at that time that I think the only person who could actually pull this off with me in Pakistan was going to be Zartaj. Because iska, as she said earlier as well, iska hamesha se raha hai ki she has to do something different, something fresh and all those things. So yeah, I came, I had a chat with her. As she said, 4 years. It was a dance of disappointments. Didn't really get anywhere. But eventually then in 2018 we did our first हमने अपनी पहली वर्कशॉप की ब्रिटिश काउंसिल कराची लाइब्रेरी में.
And then, as you can see on the screen right now, these are all the different partners we've worked with. Actually, there's still way more partners जिनके साथ हमने काम किया. But these are just some of the ones जिनके साथ हमने नाम लिखा है. Actually, यहाँ पे UNICEF भी नहीं हमने डाला हुआ, UN Women भी नहीं डाला हुआ, अकूत फाउंडेशन नहीं डाला हुआ, and I'm sure जितना मैं सोच रहा हूँ और हो जाएंगे. हाँ जी. So that is basically जो था हमारा. This is the idea behind PSEC was के it was going to be face to face शुरू से. बट जो हमने एक कोर चीज़ सोची भी थी एट द बैक ऑफ द माइंड वो ये था बिकॉज हम लोग जो स्टूडेंट्स थे जिनको हम केटर कर रहे थे दे वर नॉट ओनली इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के भी अलग अलग इलाकों से जैसे सरताज ने मेंशन किया थर से थे और फिर यहाँ पे जो सबसे एलीट स्कूल्स हैं कराची अमेरिकन स्कूल हो गया उनके साथ हमने किया. फिर हम लोग बैंकॉक में जाके हमने किया. ज़रताज ने के लिए इंडोनेशिया में टीचर डेवलपमेंट की वहाँ पे. मैंने इंडोनेशिया का जो है विंग चेक किया जाके वहाँ पे हमने थोड़ा सा किया. ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग कर ही रहे थे सब कुछ एज इट इज़. सो काफ़ी चीज़ें जो है वो बढ़ती चली गई. बट हमारा अल्टीमेट गोल यही था बिकॉज हमने अपनी 2-3 साल की लर्निंग लेके हमने उसको सब चीज़ों को डिजिटाइज करना था. Because we knew कि 12,000 बच्चा फेस टू फेस तो कर लोगे बट देन व्हाट अबाउट द मिलियंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स जो आपके उस चीज़ों से बेनिफिट ले सकते हैं. बिल्कुल. तो अल्टीमेटली हमारा गोल था सब कुछ डिजिटाइजेशन की तरफ ही जाना एंड कोरोना ने सब कुछ आके एक्सेलरेट कर दिया. तो हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा अब करेंगे बट वो फिर कोरोना अब आया और फिर अब हो गया सब कुछ. तो that's so essentially if you really want to know the story I remember in so March 2020 was when things got really serious. And I was going back to Australia at that time. And I remember things were very grim and it wasn't looking very good at all. So I remember at that time क्योंकि PSEC का हमेशा से जो ideology थी that was keeping everything very face to face. बच्चों के साथ बैठना उनके hands-on activities करना very interactive, very face to face. Eventually फिर वही हुआ कि because essentially फिर ये एक कहानी ऐसी बन गई जहाँ पे जो हमारी स्कूल्स के आउटरीच सेशंस होते थे डिफरेंट स्कूल्स के साथ डिफरेंट फाउंडेशंस के साथ वो बिल्कुल पुल बैक हो गए जस्ट बिकॉज के कोरोना की वजह से. तो देन दैट जस्ट गिव अस अ बिट ऑफ एन एक्सेलरेशन कि जी हम लोग अब जो है वो वी हैव टू डिजिटाइज दिस. तो आई थिंक फिर हमने भी वर्क फॉर आई थिंक अ गुड 2 to 3 years जिसमें हम लोग जो है वो जिसमें हमने बड़ा पुश किया इसको बड़ा वो किया. गिव मी 5-10 minutes. सो हमने बड़ा पुश किया उसको बड़ा हमने धक्का दिया. तो इवेंचुअली फिर आई थिंक हमने ज़रताज प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आई थिंक हमने नवंबर में क्यूरियोसिटी टेक लॉन्च किया. इज दैट व्हेन वी लॉन्च्ड इट? या लेकिन आप मार्च 2020 की बात कर रहे हैं उसके बाद 2-3 साल नहीं गुजरे. So yes, yeah, right. थोड़ा सा हाँ It was earlier. Curiosity Tech जो है वो उससे पहले हुआ था and then we started QriosityNet. हमने शुरू कर दिया था सितंबर से basically. Yeah, September last year. तो क्या अभी Curiosity and Curiosity Tech में आप अभी globally दूसरे students को भी आप लोग training देते हैं या just Pakistan for now? Yeah. So main market is Pakistan, but we do get customers from abroad as well. Like currently we are working on a summer camp, which is all online. And we're working with our, a company who's basically, they are an online school, Little Stars, and we're doing a summer camp with them. And so that summer camp is being conducted through using this digitized material. Where we have courses like Life from Space, we have virtual robotics. So we have this online STEM portal, that's what we call it. And all these courses are on it. So students, you know how technology is. It is really advanced. We need it for doing a lot of things and for scaling stuff. Right. But at the same time, it's very unreliable. So because with online sessions, what happens is people get disconnected. They don't have stable internet. So what we have done is they have videos and all the content in front of them. So they create an account and that's how they access it. And online, we are there as a facilitator. So when we facilitate them, they have the content, they have access to the content. And so parents are loving it. We're doing a great summer camp these days. By the way, how do you decide the name of that app? So the naming was very difficult. There are 2-3 factors. So we know that we want to nurture curiosity, being curious.
Yes. We encourage children to ask questions. Okay, as a mother, I know I've scolded my kids for asking questions, but then when I got into teaching, I realized that until they question, they don't really learn. And so we encourage children to ask those questions, because that is what brings out their curiosity. And so the name Curiosity Tech and QriosityNet means curious, a network of curious people. So net means network over there. Okay. That is how we name networking. Yeah. Networking and network, yes. Nahyan, you have to leave the session early, तो अगर आपका टाइम पहले ले लूँगा थोड़ा सा कि इसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से स्प्रेड करना है पाकिस्तान में. राइट. I think अगर आप स्क्रीन पुल अप कर लेते तो उसमें there we go. Actually, wait, let me reshare my screen just a sec. So this is the one, and I think अब आपको कुछ properly नजर आ रहा है. Okay. So this essentially is our magnum opus. So this is, this is our jewel. This is our crowning jewel. जो भी आपको इसको basically आपने इसको title देना है. This is QriosityNet, जिसके भी हम बात कर रहे थे. So QriosityNet essentially is our LinkedIn for students. सबसे पहला हमें सवाल मिलता है, इसका बड़ा बेसिक आंसर जो सबसे पहला हमें सवाल मिलता है वो ये है कि जी LinkedIn is already there, तो आप लोग क्या इतना स्पेशल कर रहे हैं? बिल्कुल, आई एम श्योर हमें काफ़ी दफ़ा इस सवाल मिलता है, और इसका एक बड़ा बेसिक आंसर हम ये है कि बिफोर वी एक्चुअली, जब हमें ये आइडिया आया था तो हमने सबसे पहला काम ये किया था कि वी एक्चुअली वेंट ओवर द वेबसाइट, वेंट ओवर लिंक्डइन. और हम जब लिंक्डइन के ओवर जाए थे तो हमने देखा कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज़, हम लोग जो है वो बच्चे की तरह साइन अप करते हैं, राइट, एज अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज या ऑफ एनी हाई स्कूल. And it turns out कि LinkedIn is very very professional with these things. बहुत ज़्यादा professional देखता है. So जो भी हम apply कर रहे थे, जो भी हम काम कर रहे थे, everything was very very professional over there. कि जी आप you have to be a part of some company, या आपको ये करना है, and they didn't really care about कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, या कहाँ से पढ़े हुए हैं, आप अपने debating team का हिस्सा हो, या आप अपनी football team का हिस्सा हो. They really didn't care about any of those things. And I think that's where we हमें फिर वो हुआ कि यार there's not any one platform, professional platform for students जहाँ पे उनको internship opportunities मिल रही हैं, scholarship opportunities मिल रही हैं, जहाँ पे उनको mentorship मिल रही है, जहाँ पे उनके साथ mentor matching हो रही है, जहाँ पे वो अपनी digital student profile बना के रख सकते हैं. तो I think हमने कोई 600-700 students और parents का हमने एक survey किया था, जिसके अंदर हमें feedback ये मिली थी कि scholarships की बहुत issues होते हैं. People don't know about where to go for scholarships. एजुकेशन कंसल्टेंसी के जनरली बहुत इश्यूज होते हैं. ट्रेंडिंग करियर्स के इश्यूज होते हैं कि यार अगर आज मैं ये डिग्री करता हूँ, कोई भी एक ABC डिग्री करता हूँ, तो 10 साल बाद मेरा कोई फ्यूचर होगा भी कि नहीं होगा. ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे. एग्जैक्टली, बहुत बड़ा इशू है. और फिर एक बहुत बड़ा जो हमने एक और बहुत बड़ा मसला देखा था वो था कि हर किसी का जो पेपर वर्क था, एवरीथिंग वाज हार्ड कॉपी. मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिली है वो भी हार्ड कॉपी में है, मुझे सर्टिफिकेट मिला है वो भी हार्ड कॉपी में है. सो हमने फिर एक यहाँ प्लेटफॉर्म बना दिया, जैसे आप यहाँ देखेंगे डिजिटल स्टूडेंट प्रोफाइल का, जो भी आपकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो भी आपकी बिल्कुल रिकॉर्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, दे आर ऑल एसेंशियली कंपाइल्ड इनटू बीइंग दिस इलेक्ट्रॉनिक, और वहाँ से फिर वो जो है वो हम आगे चला के लेके चलते हैं. सो दैट इज एसेंशियली द आइडिया बिहाइंड QriosityNet. और उसके साथ साथ आई एम श्योर ज़रताज जैसे जैसे बात करेंगी वो ऐड ऑन करती जाएंगी. मैं यहाँ पे आप लोग से इजाज़त लूँगा. आई डू नीड टू रश एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट थैंक यू फॉर सो मच फॉर हैविंग मुदस्सिर एंड सारा. You guys enjoy it, Zartaj. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Cheers. Take care, guys. Bye. Allah Hafiz. अच्छा Zartaj, before to move on, I want to know one thing. Generally पाकिस्तान में जो concept है teaching का, it's quite traditional teaching. हमारे यहाँ bookish literature पढ़ाया जा रहा होता है, जो लिखा हुआ है, even तो उसकी demonstration भी नहीं हो रही होती है. And we have a number of computer teachers as well. आपने इस फील्ड में आई एज अ टीचर ज्वाइन किया और इस एक ग्रेट इनिशिएटिव लेकर आई. क्या आइडिया था, क्या चीज़ ऑब्जर्व करी सोसाइटी में और जिसके बाद आपने स्टेप लिया? देखिए मैं आपको बताती हूँ. जब मैंने आपको बताया कि 2010 में मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया हक अकेडमी एज अ कंप्यूटर टीचर, वो भी एज अ जूनियर कंप्यूटर टीचर. मैं क्लास 1 to जी मैं क्योंकि 3 साल घर में बैठी रही थी,
और उसके बाद फिर मुझे स्कूल की जॉब के लिए भी जाने के लिए मैं कांप रही थी बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, आफ्टर वर्किंग फॉर 10-12 years इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। मेरा ये हाल था घर बैठने के बाद। When I went in, वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। He was very open, very flexible. और मैंने जब वहाँ पे टीचिंग शुरू की, मुझसे ज़्यादा लाइक NED की एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की टीचर थी जो सीनियर्स को पढ़ाती थी O लेवल को, और मुझे उन्होंने छोटे बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए रखा था, जिसमें ज़्यादातर ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे जिसमें बच्चों को माउस कीबोर्ड यूज़ करना सिखा रहे हैं, फन टूल्स यूज़ होते थे। अच्छा, मेरा हमेशा से, मैंने आपको कहा क्योंकि मैं हमेशा से टीचिंग नहीं कर रही थी, मेरी अप्रोच ही डिफरेंट थी। जो मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था उसने मुझे टीचिंग को रेवोल्यूशनाइज करने में बहुत हेल्प की है। अच्छा, मैं जो काम करती हूँ उसको मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं उसे जॉब समझ के, बर्डन समझ के नहीं करना चाहती। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आपने अक्सर सुना होगा कि जी आप जो चीज़ पैशन के साथ करना चाहते हैं वो करें। राइट, बिकॉज जिस चीज के बारे में आप पैशनेट होते हैं ना, आप उसके अंदर क्रिएटिविटी भी लाते हैं, आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, राइट। अच्छा, टीचिंग का मुझे, मैं नहीं समझती, मैंने की है, पहले भी की है, अपना हाई स्कूल करने के बाद भी मैंने शौक था टीचिंग करने का, कर ली थी। बट देन आई रियलाइज कि मैं उसको एज ए सब्जेक्ट उस तरह नहीं, क्योंकि मुझे सेम टॉपिक सेम तरीके से पढ़ाने में मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, बोर हो जाती थी। तो मैं जो एग्जाम्पल्स इंटरनेट से ढूंढ के लाती, मैं कहती थी अब मुझे नेक्स्ट ईयर भी यही टॉपिक पढ़ाना है, बट अब मैं कंटेंट चेंज कर दूंगी, एग्जाम्पल्स चेंज कर दूंगी, क्वेश्चंस चेंज कर दूंगी, ताकि मेरा अपना इंटरेस्ट रहे। अब यहाँ पे टीचर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, विद नो ऑफेंस टू एनी टीचर्स, मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट टीचर्स कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं, एंड अ लॉट ऑफ अस डू दैट। अब मैं जी 25 साल से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ये सब्जेक्ट कैसे है, मुझे पता है एग्जाम पेपर क्या आएगा, बस मैंने ऐसे ही पढ़ाना है। वो जो कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है चेंज करना, एंड चेंज करने से लोग घबराते हैं। मैं उसे एज अ चैलेंज लेती हूँ और मैं उसे एंजॉय करती हूँ। मुझे अगर थोड़ा अर्सा एक ही जॉब में एक ही काम करते हुए हो जाए तो मैं बोर हो जाती हूँ और फिर मुझे कुछ नया करना होता है। सो दैट इज आई थिंक इन मी कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती सेम तरीके से। सो उस चीज़ को मैंने, और फिर मैं क्योंकि कंप्यूटर स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा रही थी जिसमें बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों को खुद बनाना चाहिए, मेरा माइंडसेट ये था। जबकि दूसरे स्कूल्स में मैंने सुना है कि लोग टीचर्स भी बना के दे देते हैं प्रोजेक्ट्स, आ जाता है। मैं जो है वो आज तक, मैं अपने बच्चों को भी तंग करती रहती हूँ। आई हैव 2 टीनेजर्स, माशाल्लाह, घर में एक जंग ही रहती है हर वक्त। सो दोनों को मैं यही कहती हूँ, खुद करो, जितना आता है खुद करो। लेकिन फिर टीचर्स भी जो है ना, वो बच्चों का काम उस हिसाब से देखती है, उन्हें पता है कि ये पेरेंट्स करके भेज रहे हैं, फिर भी उनको नंबर उन्हीं को अच्छे मिल रहे हैं। वहां पे फिर ये बच्चे मेरे डिस्करेज होते हैं कि वो देखिए वो अपनी मम्मा से करवा के लाया था, उसको मार्क्स अच्छे मिल गए, आपने तो मुझे हेल्प नहीं की। सो आई हेल्प, आई गाइड, बट आई डोंट डू इट फॉर देम। सो मेरे अंदर ये जो चीज़ थी ना, उससे मैंने क्रिएटिविटी में लेकर आई अपनी टीचिंग के अंदर, और मुझे ये होता था कि जो काम बच्चे अपने हाथ से करेंगे वो उन्हें हमेशा याद रहेगा, अदरवाइज मैं उन्हें कुछ नहीं पढ़ा सकती। आई ऑलवेज फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग। मैंने कोई ट्रेनिंग, बहुत कम ट्रेनिंग्स की हैं। मैं देखती हूँ सॉफ्टवेयर की हेल्प है, उसे लोग यूज नहीं करते। मैं कहती हूँ आप हेल्प में जाएं, सब कुछ है, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए आप मुझे बता दें, कोई भी नया टूल आप मुझे दे दें, मैं कहूँगी मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं लर्न करके कर लूंगी उस पर काम। आई नेवर से नो, because I believe in self-learning, and that is what I impart to my students as well. That's great, Zartaj. I really want to know कि आपने मिस्टर नाहियान फारूक को कैसे चूज किया, यानी कि आप बहुत सारे इंटर्न्स के साथ काम करती थी, then how did you develop the sort of trust कि आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, वो भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए अपने? Right, very good question. सारा नेहान के साथ इस तरह से था कि जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करती थी ना, सो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर आपको एक स्पार्क नजर आ रहा होता है, एंड दैट वाज विद नेहान एज वेल। सो नेहान जब ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, उसके बाद भी मैं अपने सारे जो भी रोबोटिक्स लैब से निकल के जाते थे, क्योंकि फ्रेश इंजीनियर्स आते थे, मैं उनकी पहली बॉस होती थी, तो वो हमेशा जाके मुझे एक्नॉलेज करते थे कि मैम आपसे हमने ये सीखा
और हमें अब ये काम आ रहा है। अभी तक लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, किसी की जी यूएई में वो 3D प्रिंटिंग की कंपनी है, पीर अरकम, आई डोंट नो, वो अब मेरा इंटरव्यू सुनेगा तो वो कहेगा वो फर्स्ट जॉब के लिए आया था रोबोटिक्स लैब्स में, उसकी भी फर्स्ट जॉब थी, मैं उसकी पहली मैनेजर थी, एंड ही इज स्टिल ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स, आई मीन जो सिली थिंग्स हम लोग वहाँ पे करते थे। तो हम लोग का बड़ा कैंडिड सा एनवायरनमेंट था, मैं उस तरह से लेती नहीं थी, बॉस में कहती थी मुझे ना कहो, वी आर ऑल टीम प्लेयर्स, हम सारे टीम मेंबर्स हैं। सो वो जो चीज़ होती थी ना, तो उनके साथ वर्क करके तो नेहान के अंदर एक वो था कि हाँ जी ये एक चीज़, और फिर जब ये आइडिया लेकर आए थे तो मुझे लगा, तो वही अगेन मेरे अंदर वो एडवेंचरस नेचर है मेरी, तो मैंने कहा ठीक है जी करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। मैं किसी चीज़ को नहीं कहती, और मुझे ये होता है कि अगर ये यंग लड़का कोई आइडिया लेकर आ रहा है और वो मुझ पे रिलाई कर रहा है कि मैं उसे सपोर्ट करूं तो ये आइडिया बड़ा हो सकता है, तो व्हाई नॉट। सो मैं उस तरह से सोचती हूँ कि अगर मेरी कंट्रीब्यूशन से वो कुछ अचीव करना चाह रहा है, और फिर उसके बाद काम करते करते सिनर्जी ट्रस्ट डेवलप होता गया, जिस तरह से वो काम करता है और मैं काम करती हूँ, आई थिंक इट सिंक्स इन वेरी वेल। हमारे विजन्स अलाइंड हैं, मिशंस अलाइंड हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। सो वरना तो आपको बहुत ये स्टार्टअप्स में स्टोरी सुनाई देती है, फाउंडर्स के साथ लड़ाइयाँ हो गई, कंपनीज बंद हो गई, एक उधर चला गया एक उधर चला गया। आई थिंक अभी तक हमारे साथ तो ये नहीं हुआ है, बट इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह 2012-13 से मैं नेहान को जानती हूँ, एंड सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। बस अल्लाह ताला करे कि हमारी लड़ाई ना हो इस शो के बाद। सो या नहीं, मैं लड़ती ज्यादा हूँ, बट आई थिंक नेहान जो है ही इज वेरी काम, वेरी कंपोज्ड एंड वेरी मैच्योर, आई वुड से। सो या बेसिकली पाकिस्तान या जनरली इस प्रॉब्लम से आती है स्टार्टअप्स के अंदर या डिफरेंट बिजनेस के अंदर कि टीम वर्क का इश्यूज आता है। तो अगर टीम बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग हियर? और नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आपने यानी कि इनिशियल फंडिंग आप लोगों को कैसे मिली, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आई नो यू मेंशन कि आप लोगों ने 4 साल जगह जगह आप लोग गए, मिले लोगों से, लेकिन इट वाजंट हेल्पफुल। तो व्हाट डिड यू चेंज एग्जैक्टली कि एकदम से आपको इन्वेस्टर्स भी आपको मिले, दूसरे कनेक्शंस भी आपको मिले अपने स्टार्टअप के लिए? अच्छा सारा, जस्ट अ लिटिल थिंग, हमें अब तक कोई इन्वेस्टर नहीं मिला है। मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है हमारे साथ। हमें इन्वेस्टर कोई नहीं मिला। हमने अपना जो भी हमारी सेविंग्स थी, नेहान की मेरी, हमने वो पूल इन करके हमने वो वर्कशॉप्स कराना शुरू की, राइट। एंड देन बेस्ड ऑन दोज वर्कशॉप्स व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग पेमेंट्स, हमने वही वापस कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो दैट इज हाउ पाकिस्तान पाई स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर का ट्रैक्शन शुरू हुआ। एंड फ्रॉम वन इवेंट टू दी अदर हमें जो पेमेंट्स मिलती थी हम दोबारा कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। नेहान और मैं सैलरीज नहीं लेते थे बहुत अरसे तक। हमने अभी शायद रिसेंटली क्यूरियोसिटी से लेना शुरू किया। दैट टू हम लास्ट ईयर एपिक मेगा ग्रांट्स विनर हो गए। एपिक मेगा ग्रांट्स के लिए जो एपिक कंपनी, आई एम श्योर आपको फोर्टनाइट गेम पता होगी, जो ओनर्स है, बिल्कुल। सो एपिक गेम्स जो है उनकी ग्रांट हमने आई थिंक 2020 अगस्त में विन की है ड्यूरिंग कोविड। हमने वो एक साल पहले एप्लीकेशन जो हमने जिस दिन विन की उससे एग्जैक्टली एक साल पहले हमने अप्लाई की थी, विद नो होप्स, नथिंग, वरना शायद हम भी कोविड के बीच में बंद हो जाते, वी वुडंट बी एबल टू सर्वाइव। But alhamdulillah, I think that grant made us survive. We're still surviving. And we started working on QriosityNet. So whatever we earn, we invest back into the company. The other thing, हम लोग पहले कोई किसी इंक्यूबेशन सेंटर से एसोसिएटेड नहीं थे जी। हमने बहुत, और हम दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, राइट। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेहान इज परसुइंग हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब हम आई थिंक हमारे कॉन्टैक्ट्स में निदा और आथर उसामा हैं जिन्होंने एक स्टैंड चार्टर्ड विमेन इन टेक का प्रोग्राम किया, और वो एंटरप्रेन्योरशिप की पहली ट्रेनिंग थी जो मैंने अटेंड की और नेहान ने, और वहाँ से जो हमारी ट्रेनिंग हुई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, एंड देन ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि स्टार्टअप इकोसिस्टम चलता किस तरह है। वो ट्रेनिंग हमने ली आई थिंक 2019 में। फिर मैंने फौरन ही शी लव्स टेक के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, सो आई वाज द फर्स्ट रनर्स अप। उसके आगे फिर हम अब रिसेंटली हम लास्ट NIC कराची में इंक्यूबेटेड है, इनफैक्ट वहाँ से अब ग्रेजुएट कर रहे हैं। सो
और वहाँ पे हमने फाउंडर इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग ली, जो कि दुनिया का बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, राइट? सो आई थिंक doing a great work in that. बिल्कुल बिल्कुल, उमर आब्दीन तो अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, बट उनके साथ बहुत अच्छी हमारी वो है रिलेशनशिप. ही इज वेरी हेल्पफुल, वेरी फोर्थकमिंग. उसके अलावा असफर है वहाँ पे, बहुत पूरी एनआईसी की टीम. जी जी जी, असफर नेटवर्किंग में, मेंटोरिंग में, कोचिंग में एनआईसी कराची का बहुत रोल है. इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड वुमेन इन टेक प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है. शी लव्स टेक की हमने थोड़ी सी ली थी. सो to answer Sarah's question, Sarah, there were two things. A, we got the mega grant, which helped us survive financially. And now we're looking for funding again, because obviously वो एक certain runway था जो हमें मिला. And entrepreneurship training, so all the coming startups, upcoming startups में यही कहूँगी कि अपना कोई भी idea है ना, वो लेके आप किसी incubation center के साथ associate हो जाएं. So you get to understand the cycle. हम थोड़ा सा उसमें late हो गए, but I think it's better late than never. Would you recommend कि लोग कोई ना कोई इंक्यूबेशन सेंटर में ज्वाइन करे, यानी कि मस्ट है ज्वाइन करने के लिए किसी भी स्टार्टअप के लिए? या I would definitely recommend, Sarah. In fact, I say कि आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी में कदम रखें, आप अपना एक स्टार्टअप आइडिया लेके आप एक आईडीए के साथ जाएं. मैं आपको बताऊं, मैं एक फेलोशिप के अंदर थी जिसमें मैंने देखा है कि बच्चे हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ पे बच्चों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, उनको फंडिंग दे के 5-5 लाख रुपए की आप अपने आइडिया को मटेरियलाइज करें, आप उसको बनाएं, लाइक मेक इट. सो इनोवेशन जो है ना, वो इस तरह से आपने प्रमोट करनी है बच्चों के अंदर. और मैं जो है वो अपने बच्चों को, या मेरे स्कूल में भी जो मैं रोबोटिक्स टीम्स को वो ट्रेन करती हूँ, उनके अंदर जो जैसे प्रोग्राम है फर्स्ट लेगो लीग का, उसके अंदर सिर्फ रोबोट नहीं बनाना होता, उसके अंदर एक थीम होती है which is related to a current problem in the world, aligned with UN SDGs, Sustainable Development Goals, and you have to come up with a practical, innovative solution. And this is the competition for 9 to 16-year-olds. So आप ये देखें कि हमें पाकिस्तान में इन सब प्रोग्राम से सीखने की जरूरत है. ये सारे प्रोग्राम्स पाकिस्तान में बट इतने एक्सपेंसिव हैं कि चंद टॉप टियर स्कूल्स अफोर्ड कर सकते हैं. मेरा हमेशा से ये रहा है कि भाई ये सारे पाकिस्तान के बच्चों को पहुंचाएं. And I'm willing to train everybody, but Zaira, there's so much that I can do. So in order to scale all of this, we took the advantage of technology, and that's how we're doing it. It's a great discussion, Zartaj. Zartaj, I have seen one message in that you are working on that recruitment readiness drive. इसमें क्या कॉन्सेप्ट, इसमें आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, टूल्स एंड टैग, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? अच्छा जी, रिक्रूटमेंट रेडीनेस ड्राइव अगेन हमारा एक और पेन पॉइंट है. हमें तकलीफें बड़ी हैं एक्चुअली. अब मैं आपको ये बताऊं, विद QriosityNet मेरी और नेहान की बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि हम हायर करते हैं फ्रेश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, फ्रेश भी नहीं, जो अभी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं. अब उनके साथ जब हम काम करते हैं, अब हमें एक ईमेल आई, उस ईमेल का सब्जेक्ट ही नहीं है, ना एंड में नाम लिखा हुआ है, रेज्यूमे अटैच होके आ गया है, अटैचमेंट खोल के आप नाम देखें, आप ये कर लें, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कुछ नहीं होता उसके अंदर. अच्छा, अगर ईमेल लिखी भी है तो कैपिटल स्मॉल का कोई पता ही नहीं है. यू सी, सो अब मैं ये कहती थी कि आखिर क्या मसला है, स्कूल में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, वेयर इज द गैप? आप ईमेल कम्युनिकेशन आपको नहीं पता है, देयर हैज टू बी अ सिग्नेचर, देयर हैज टू बी एन, यू नो, यू हैव टू एड्रेस, देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट, सामने वाले को पता. इट्स लाइक लिटरली थ्रोइंग द रेज्यूमे ऑन समवन्स फेस, अगर आप ये देखें, राइट? ये एक प्रॉब्लम. फिर चलें जी, इंडक्ट हो गए किसी तरह से. अब उसके बाद नॉर्मल कम्युनिकेशन, नोट्स कोई नहीं ले रहा, नोबडी टेक्स नोट्स, आई एम मेकिंग मेंटल नोट्स. ये आपको जवाब मिलता है जब आप कहते हैं नोट्स. अच्छा भाई, बड़े आप तीर मार रहे हैं, हम जो है वो बेवकूफ है जो नोट्स ले रहे होते हैं. एनीवे, ये जो प्रॉब्लम्स नजर आई, फिर लोग बात नहीं करते. हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि जी इंग्लिश बोलने में लोग फ्लुएंट नहीं होते, ठीक है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपने काम में एक्सपर्ट हैं, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, दे डोंट नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स. मुझे अपने मैं कंपनी में काम करती थी, मुझे अपने बॉस की बात याद है कि यू आर अ टेक पर्सन, यू डू अमेजिंग थिंग्स, बट इफ यू कांट सेल योरसेल्फ और सेल व्हाट यू आर डूइंग, then there's no good, you're no good.
और इस तरह से करके उन्होंने मुझे बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे लाए वो कि नहीं, यू हैव टू कम विद मी फॉर मीटिंग्स, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू फेस द कस्टमर. And I think that experience has helped me a lot as a tech person. So ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर में आ गए, अब हम यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें कि जी आपके बच्चे जो 4th ईयर के हैं उनको आप QriosityNet पे इंडक्ट करें. वी हैव ग्रुप्स जहाँ पे मेंटोर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर गाइडिंग देम. हमारे पास एक इंटरव्यू टिप्स का ग्रुप है, एक हमारा रेज्यूमे राइटिंग का है, एक हमारा मेंटल वेलबींग का है जो कि कोविड के बाद हमें बहुत ज्यादा जरूरत फील हुई. स्टूडेंट्स वांट टू शेयर, सीक एडवाइस एंड ऑल. सो रिक्रूटमेंट रेडीनेस इज बेसिकली सेशंस विद एक्सपर्ट्स जिसमें वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. एंड देन वी डू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज. सो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी है, सो वी विल डू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द लेसन्स लर्न्ड टू गेट देम एंगेज्ड एंड प्रैक्टिस दोस. So this is the idea. जैसे हम पिचिंग करते हैं, अब स्टार्टअप्स की जब ट्रेनिंग होती है तो हमसे पिचिंग की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आप पिच करें, प्रैक्टिस करें. अब हम उन बच्चों को बिठा के कहेंगे जी आपका इंटरव्यू हो रहा है, एक पैनल है इंटरव्यूअर्स का, हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ. ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने से, ये ग्रूमिंग हमारे यूथ को चाहिए. सीरियसली पाकिस्तान में तो लिटरेसी का इशू भी है कि हमारे लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सेविंग. इसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है कि सेविंग में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट का क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं. तो अगेन मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम बड़ा हेल्प आउट करेगा स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी वेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियली, नॉट जस्ट एग्जैक्टली मैनेज कर सकते हैं, बट अगेन फिर दूसरी प्रॉब्लम भी आती है कि साथ कि दोज आर फाइनेंशियली वेल्थ, तो फिर उनको मेंटली प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं. तो अगेन इस प्रोग्राम इज आल्सो फुलफिल दैट नीड एज वेल कि वो उनको मेंटली भी थॉट पे तैयार करेगा. हियर आई हैव वन मोर क्वेश्चन जरताज. Once the student joined at QriosityNet, अब प्रॉब्लम ये जो मैं समझना चाह रहा हूँ उसके अंदर कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो वो क्यूरियोसिटी से क्या लिंक्डइन पे मूव कर जाएगा, क्या क्यूरियोसिटी में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं उस टाइम भी? देखिए जी, हम स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं और हम हैंड होल्ड कर रहे हैं अपने यूथ का जब वो अर्ली करियर स्टेज पे है, जिस वक्त उन्हें कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट नहीं जी. उस वक्त से जब स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो जैसे जैसे स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा प्लेटफॉर्म भी उन्हें सपोर्ट करता रहेगा थ्रू आउट द करियर. हम ये नहीं है कि आगे जाके उन्हें छोड़ देंगे. इस वक्त लिंक्डइन पे इस वक्त 24% स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द एज 18 to 24, लेकिन उनकी भी प्रोफाइल्स एक्टिव नहीं है. उन्होंने इसलिए ज्वाइन कर लिया है कि जी एलुमनाई से कांटेक्ट करें या देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, बट द प्लेटफॉर्म इज नॉट रेलेवेंट फॉर देम एट ऑल. हम उनको सीरियसली एज वेल. जी बिल्कुल बिल्कुल. स्टूडेंट्स को कोई वो नहीं करता अपार्ट फ्रॉम अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, किसी की प्रोफाइल ही प्रॉपर बनी हुई नहीं है. अब हम तो उन्हें गाइड कर रहे हैं कि जी आपकी प्रोफाइल इज योर फर्स्ट थिंग दैट द एम्प्लॉयर्स आर गोइंग टू सी. Exactly. So we are guiding them towards it, right? So ये चीज है. तो हम बिल्कुल उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह. उनके साथ रहेंगे throughout their career growth and we will be offering internships and jobs because major जो एक मसला मैंने ये भी देखा है कि some people charge for it. Obviously वो ये services provide कर रहे हैं for a living. But आप एक स्टूडेंट से, एक ऐसे बंदे से जो अभी जॉब ढूंढ रहा है, आप उससे कैसे चार्ज कर सकते हैं? So हमारा जो बिजनेस मॉडल है, we earn revenue from institutions and from organizations जो ये जॉब पोस्टिंग्स कर रही हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स से चार्ज नहीं कर रहे हैं. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू अवेल दीज सर्विसेज. Great idea. Sarah, you want to add something here? No, I just wanted to say कि वाकई this is something that we're not seeing enough of, right? From like other startups or from other companies. And to see that especially a woman-led startup is doing something like this in Pakistan says a lot about you and says a lot about your mission itself. So I hope inshallah कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा आपका platform भरे, लोग आपको attention आपको मिले जो what you're seeking for, and that students join करें seriously to take this opportunity. You know, और जो हमारे viewers हैं वो भी इस chance को ना miss करें बिल्कुल. अच्छा Zartaj, here's one problem that कि generally what I've been observed that कि बड़ा आसान होता है स्नैक वीडियो और टिकटॉक इंस्टॉल करना, यूज़ करना, बट बच्चों को बड़ा मुश्किल काम है कन्विंस करना कि यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ऐप. तो हाउ मच इज डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उनको रियलाइज कराएं कि दे हैव टू इंस्टॉल दिस ऐप ऑन द सेल फोन्स?
अच्छा जी, अभी इसकी ऐप नहीं है, इट्स अ वेबसाइट. मैं अगर स्क्रीन शेयर करूं आप, do I have the permission? So I can quickly show you कि इसमें account बनाना doesn't take a lot of time and you can get on QriosityNet really quickly. Yeah, please let me know if you can see my screen. Yeah. Yes. Mm-hmm. Okay, cool. So over here, this is the landing page of QriosityNet. And over here, it talks about what opportunities you're going to get with your profile. So this is what it is. Once you're ready to sign up, you click on sign up. If you're a student or an individual in early career stage, you click on this and you follow through the process to sign up. It just requires your first and last name, email address, password, and you are signed up. Next, if you want to sign up as an institution or a company who's offering services or jobs to the students, then you can follow this route. And you can go ahead and create your business page as well. It doesn't require a lot of questions to be answered. I'll just quickly log in with my account and show you the interface as well. It's fairly simple. And उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि you will get worried कि मैंने क्या करना है, किस तरह से करना है. Now, this is, you know, the internship opportunity. We post them. बहुत सारी opportunities जो आती रहती हैं, we keep posting them, be it scholarships, be it internships. Summer में internships की बहुत ज़्यादा वो options थी. Yeah. So we do that, right? Then if I click on my profile, I go here and profile will look a lot like LinkedIn because we're collecting the same information. Over here, the summary serves as your personal statement as well. So आपका personal statement, you need it for university admissions, for, you know, even your resume. So you can put down that summary over here and keep editing it. Then in terms of education, you can mention your subjects, your grades, because this is what organizations and everybody is looking at. And this is where we say that it is student-centered. Then we have experiences. अब आप sports में अच्छे हैं, आपने कोई tournament win किया, आप वो भी डाल दें. You have won a debate competition, you put that down. You won a robotics competition, science fair, anything else. All of that is experience. You put pictures, you can share links where it talks about your participation. You can do every experience over here, you can add it. Then comes the skills part, and we have developed it. We have divided it into 3 parts: professional knowledge, tools and tech, and interpersonal skills. And similarly, in the end, we have following, what companies or institutions you're following. So those will come here. So this is, you know, the more your profile is complete, the better it is. I'll take you to one more feature, which is groups. जो मैंने आपको बताया, it's very popular. सबसे ज़्यादा हमारा interview tips वाला group popular है, जिसमें there's a chat going on about different things. People have questions and we answer them. We have mentors coming in and answering them as well. So we have a good group of people over here, and this is the chat over here. So it's fairly simple to join QriosityNet. You just create a profile with your name and email address and then keep adding to the profile. The more you build it, the more relevant opportunities you get. So I hope this was helpful in understanding. Yes. Great. I have one more question, Zartaj. Especially to A-levels or intermediate students होते हैं, they have interest to go abroad for the higher studies. तो उसमें कोई जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं कि बच्चा A-levels के बाद इंटर के बाद अगर पढ़ाई पढ़ने चाह रहा है तो उसको ईजी एक्सेस हो कि वो एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकें. बिल्कुल जी. एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स जो है, जो अभी मैंने आपको स्कॉलरशिप्स की प्रोफाइल दिखाई, उसका मकसद ही यही है कि जी कहाँ पे अंडरग्रेड की और मास्टर्स की सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. सो admissions and scholarships is one thing, and internships and jobs is the other thing that we're doing for here. We're connecting them with opportunities. और क्योंकि ये social media की तरह है, it is a social media because students want to be a part of social media. Now imagine, I was the other day observing एक student ने इस पे post किया कि जी मेरा internship का experience first day कैसा रहा. And so, you know, when they share these experiences, it brings in community engagement. And people want to talk about those things. And so this is student-centered. हर एक को पता है कि जी it's a peer who's sharing their experience. So this is what makes up QriosityNet. Thank you so much, Zartaj, for your time, for your presence. And really, we are very happy कि इस तरह का
सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ जिसके ऊपर बच्चे एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. द लास्ट एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस कि वो किस तरीके से इसमें बेनिफिट, एंड अगेन दे आर आल्सो द बेनिफिशियरी कि दे विल गेट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द पाकिस्तान. बिल्कुल जी. So the only message with regards to QriosityNet is that we want every young person in Pakistan particularly to be on this platform and benefit from it. This is developed for students and with the students, I would say, because we take constant feedback from our users and we are improving in terms of the features. Obviously, it's a growing platform and it will grow with the help of the people of Pakistan. In terms of organizations, I would just say that these organizations and universities need to come on board ताकि you can handpick your future employees and your future batch of students. Right. आपने students के लिए admissions के लिए they put up ads and things. It is not very expensive for universities and organizations. So please इस platform को utilize करिए. You will find the students all sorts of talent. And for students, there's an amazing opportunity to groom themselves, to bring themselves up to the level कि आप interviews में अपने select हों. So we guarantee कि अगर आप हमारी trainings को follow करें, हमारी recruitment readiness drive को, you will get an internship or a job in 60 days. You follow all that and we guarantee that. So inshallah, if you follow all that advice, all that guideline, and you follow that, then you definitely end up with a job or an internship within 60 days. So that is what my message is. Join QriosityNet so you're not left behind. Thank you so much, Zartaj. Even I wish at the time of when I was at the age of 15 or 16, I had that kind of opportunity. But again, thank you so much, not for the presence only, but for this startup, for this initiative, which helps everyone who wants to make something better in their life. Sarah, closing remarks from your side. Thank you once again very much. ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर and we learned a lot from you. Inshallah, फिर we hope to see you guys again. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.